राधे राधे। ये रसिया माधुरी का पद्य है। ब्रज रस बरसी रहो ब्रज बीथिन, ज्ञानी बिनु जाने भर में। ब्रज की गली गली में ब्रज रस बरस रहा है, जिसे देखकर बड़े बड़े ज्ञानी भरमाए, कंफ्यूज्ड हो रहे हैं, भ्रमित हो रहे हैं. Is raining torrentially in each and every lane of Braj, seeing that the great Gyanis are confused. We should know that what is Braj Ras and why the Gyanis are confused looking towards the Braj Ras. How come Lord Krishna is raining the Braj Ras all the time in the lanes of Braj? When Lord Krishna descended 5,000 years ago on the earth of India in Uttar Pradesh, he descended with his divine Vrindavan. And many associates of Sri Krishna who were the devotees of Ragatmika Bhakti, they also descended with Sri Krishna. The Vrindavan we see right now, where we used to go, that is not divine Vrindavan. That is material Vrindavan. You are sitting here. It's a material, and in the same way, Vrindavan is also not a divine place. But because Lord Krishna descended with the divine Vrindavan in the same area where we see now the present Vrindavan, the area of present Vrindavan is same. In that area, Lord Krishna descended with the divine Vrindavan over there. So because he descended there with divine Vrindavan, associates, they were all divine, they were the eternal associates of Sri Krishna. And he played all the pastimes of divine loveless. So with the effect of divine Vrindavan, divine pastimes of Sri Krishna, that area is still affected. If you still visit Vrindavan, you will not find it in the same way as you see the other cities of India or outside India. There is some divinity. Everyone pronounces Radhe Radhe over there. The postman will come, he will knock the door, he will not say anything. Radhe Radhe. Anyone. When they call each other, they say Radhe Radhe. And Sri Krishna Bhakti is also seen in Vrindavan in maximum quantity. Everyone you find in Vrindavan these days as well, they are the exclusive devotees of Sri Radha Krishna. That is the effect of divine Vrindavan. And he played all the pastimes which were full of love only. Only all the pastimes were full of love. Who are those Jnani? Why the Jnanis are confused? Lord Krishna is playing his own pastimes. Everyone is enjoying. Why Jnanis are confused? Jnani means what? Those who have attained the knowledge of God, Brahma. The Jnanis are called Brahmanandi.
There are three forms of God. God is one, but he reveals himself in three different forms. Vadanti tat tattvavidastvatvam yajnanamadvayam brahmeti paramatmeti bhagavaniti shabdyate. One form of the same supreme Brahma is Brahma. Brahma means Nirakar Brahma, having no form. And when the form is not there, there is no attribute, no pastimes, no associates, nothing. Satta matram nirvishesham niriham. He lives only, he keeps his existence only. Or what is his existence? He is Anand. He is bliss himself. So Anand Swarup, this is his originality, this is his nature. He lives with Anand only. There is no other attribute in Brahma. And the Gyanis worship Nirakar Brahma. Other form is called Paramatma, the form of Mahavishnu in Vaikuntha Lok is the other form of Sri Krishna. There is a form. The form is there, attributes are also there, names are also there, and his abode, Vaikuntha, is also there. But there is no associates and there is no pastime. God himself cannot play any pastime without the associates. In Vaikuntha, there are no associates of him. And he lives in his original form with four arms, with Shank, Chakra, Gada, Padma. Naturally, when you will see God with four arms, you can recognize, you can feel that he is God. Immediately, you can recognize him because human beings do not have four arms. The effulgence, the unlimited bliss, unlimited powers. We perceive everything in him. So, obviously, one can say that he is God. And when you see him in the form of God, then what will you do? Naturally, you will fold your hands, you will bow down to him because he is God. When Ramchandji descended, Kaushalyaji asked for one vardhan that I want you in the form of my son. I want to enjoy Vasalya Prem. When Ramchandji descended first time in front of Kaushalyaji, he appeared in the form of Mahavishnu with four arms, with Shankha, Chakra, Gada, Padma. Then what did she do? Kahi dui kar jori, astuti tori, kehi vidhi karau ananta, maya gun jnana, tit amana, ved puran bhananta. Immediately she stood with folded hands and she said that I am uneducated, I have no knowledge of Ved Shastra. So please tell me, how can I do stuti? I should do your stuti, I should sing the glories of yourself. How can I do? Then Sri Ramchandji said, that's why. Why you have to do all that? For you forgot that you asked for a boon that I should come as your son. So I have come over here. I am your son. You are my mother. You are not supposed to worship me. She remembered when Ram tried to make her remember all that, and she remembered, yes, 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 I did austerity and I asked you this for this boon. But I asked you to come as my son, but you are standing in front of me like my father. You are the father of the entire world.
I don't want father, I want son. So he said, I am here. No, no, no. Ki jai Shishu Leela, Ati Priya Sheela, Hui Balak Surbhupa. Ki jai Shishu Leela. Leela. Leela means deceiving, chal. So she is requesting that you have to deceive. You deceive. Who should I deceive? Deceive me and deceive the entire world. Means hide this form of God. I don't want this form. If you will stand, if you will remain in in this form of God, then how can I love you as my son? Then I will feel, oh, is God. I will always be scared seeing you. I don't want that. Kije Shishu Leela. You become like a child and make me forget about that. Whatever happened now, you appeared with four arms, with Shankha, Chakra, Gada, Padma. You make me forget about everything. Become like my son. Then she could love Sri Ram. So Mahavishnu form is the form of God. We cannot love him. We cannot embrace him. We cannot say, oh, you are my father, you are my brother, or you are my friend, you are my daughter. No, nothing. They cannot do that. So, although there is unlimited bliss, unlimited powers, the abode of Vaikuntha is divine, still there is no pastime because there are no associates. Only the devotees who realize Paramatma, they live over there. The third form of God is Bhagavan, means when he descends on this earth in a human form and behaves like an ordinary human being, he hides his Bhagavatta, his divinity, and appears like an ordinary human being. That form of God is called Bhagavan. Now we can easily love him because we have no inkling that he is God. So when is the Gyanis, they realize Brahma, who has no form, no attributes, no abode, no pastimes. So what do they realize? What is the meaning of realization of God? When they are not, there's no form, so they cannot see Brahma. When they are not seeing Brahma, then what do they have? Why do they say that I am God realized soul? Because they feel, they have an experience, an inkling of the effulgence of God. He is unlimited bliss. So they feel the bliss of the light of his body. Where this light is coming, they don't know. They haven't seen that form where the light is coming. They enjoy bliss, unlimited bliss, but they don't know whose bliss is this. Who is that personality whose bliss is enjoyed by me? I am all the time enjoying. And that because that is the bliss of God, that's why it is divine, and that is unlimited bliss. So they enjoy that unlimited bliss without seeing God, without knowing that whose bliss is this. They enjoy that bliss for thousands of years. They sit in the samadhi and they keep on enjoying the bliss. And because they never had such kind of bliss before, they never experienced it before, that's why they think there is nothing beyond it. They think that this is the highest kind of bliss. Nothing could be better, nothing could be greater than that at all. And that's why they keep on enjoying for thousands of years. They are never content. But when
Lord Krishna descended on the earth of Braj, and he was playing, he was performing the pastimes like a ordinary human being. Those gyanis who were living in Braj, they saw all that. When they saw Sri Krishna, Sri Krishna is the supreme form of God. He is supreme God. These jnanis have already realized God. Their heart, their mind is already pure. Who can see God? You have heard from Maharajji many times that R- Ram descended on this earth, Sri Krishna descended on this earth. We all saw him, but we could not recognize. We thought about them, they are ordinary human beings like us. In some ways, they are better than us. They are more beautiful, they have more power, they are more intelligent, but we never accepted them as God because our antahkaran, our mind was dirty, contaminated. So we could not realize God. We saw him, but we could not recognize him. But these jnanis, their maya has gone forever and they are enjoying the bliss of Brahma, although they didn't see. But they are enjoying the bliss of Brahma already. That's why they could recognize. When they saw Sri Krishna, immediately their heart said that he is Brahma because they have the knowledge of Brahma already. But immediately they also thought, no, no, no. We always learned there is no form of God. He is Nirakar. There's no attribute. No, when form is not there, how can be there beauty, unlimited beauty? Impossible. But if he is not Brahma, then how our mind is enchanted towards this boy? It means he is Brahma. But no, the Vedas say no, there is no form of God. Now, in that way, they are confused. Lord Krishna is playing in the courtyard of Nanda Baba. A jnani is going from there. He saw the little child is playing in the mud in the courtyard of Nanda Baba. When they saw, their mind was attracted. Because these jnani, when they realize God, and when they sit in samadhi for thousands of years, just contemplating on the light of the Supreme Brahma, that time they realize, they know there is no form of God. And when they saw Sri Krishna playing over there, that time when they go in Nirvikalpa Samadhi, any material matter cannot even enter their senses. It is impossible. Anything in the world cannot attract their senses. No matter how beautiful is that, or how peculiar or how amazing is that, any matter cannot enter their senses. But when they saw Sri Krishna playing in the courtyard of Nanda Baba, their mind was attracted immediately, immensely attracted, and so much attracted that they forgot about samadhi. They go everywhere, but they don't see anything else except God. यत्र हि द्वैतमेव भवति तदितर इतरं जिघ्रति तदितर इतरं पश्यति तदितर इतरं शृणोति यत्र वा सर्वात्मैव अभूत् तत्किंकं जिघ्रेत् तत्किंकं पश्येत् तत्किंकं विजानीयात् विज्ञातारमरे केन विजानीयात् इति. When there is duality, only then we can see something, we can feel something, we can hear something.
We can know something. But when they are seeing Brahma, Brahma, Brahma everywhere, how can they see anything else? Everywhere they see only Brahma. And after seeing Sri Krishna, their mind was attracted immediately. That's why they thought that if our mind is attracted towards this child, it means he is Brahma. But the Vedas say Brahma has no form, no attribute, no pastimes. But I am seeing him in such a beautiful way. That's why Jnani Binu Jane Bharamai. Their knowledge is confined only to Nirakar Brahma. They have no knowledge that there is a Sakar form of God as well. It is so beautiful. If you want to attain love bliss, then you have to worship only this form of God. The Gyanis do not believe in any avatar, in any form of God. That's why they are confused. So, what kind of bliss is raining all the time over there? Maharaj is explaining here. What is confusing the Gyanis in Braj? जेहि खोजत ज्ञानी जन लाखन चारिहूं वेदन की प्रतिशाखन हारि अलख इमि लागे भाखन वृंदा विपिन सखिन अंचल पट लिपट रह्यो सोई धाय. Sri Krishna is the same supreme Brahma. Jehi khojat jnani jan lakhan. There are many millions of jnanis. They are all the time trying to know that what is the form of God. How can we see him? They are realizing, they are feeling the bliss of Brahma. But where is Brahma? How does he look like? What is the form of Brahma? They have no idea. They are studying all the four Vedas day and night, trying to know, trying to derive the knowledge that where can I see him, where can I find God? But they are unable to do that. Hazaron ज्ञानी, लाखों ज्ञानी दिन रात वेद शास्त्रों के सार को निकालने में लगे हुए हैं कि हम जाने कि वो ब्रह्म जिसके आनंद को हम नित्य अनुभव कर रहे हैं वो है कहाँ, कैसा है, कहाँ मिलेगा. और नहीं मिल पाया, वो लोग नहीं जान पाए. वेद की जो 4 शाखाएं हैं, वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, सब में अच्छी तरह उन्होंने मंथन किया, नहीं जान पाए. तो हारी अलख इमी लागे भाकन. तो उनका डिसीजन क्या हुआ? अलख. There is no form of God. Nobody can see God. You can just feel the bliss of God. That's it. Nobody can see him. Hari alakh imi lage bhakan. Vrinda vipin sakhin anchal pat lipati rahyo soi dhai. But when they saw in Vrindavan that the same Brahma is playing with the gopis. The gopis are going and he is pulling the sari, the dupatta of the gopis. He is playing with them. In the kunj, in Nikunj, in Nivritri he is playing many kind of pastimes with the gopis. So they were confused that I thought that there is no form of God. But oh, the form of God is so beautiful and so full of loveliness, we could never imagine. This is the description over here. ब्रज रस बरसी रह्यो ब्रज बीच
जाने भरमाए। ब्रज रस बरस रहो ब्रज ज्ञानी बिनु जाने भरमाए। ब्रज रस बरस रहो ब्रज बीथिन ज्ञानी बिनु जाने भरमाए। ब्रज रस बरस रहो ब्रज ज्ञानी बिनु जाने भरमाए। बिनु जाने भरमाए ज्ञानी बिनु जाने भरमाए। राधे राधे जाने भरमाए ज्ञानी बिनु जाने भरमाए। राधे राधे ब्रज रस बरस रहो ब्रज बीथिन ज्ञानी बिनु जाने भरमाए। ब्रज रस बरस रहो ब्रज ज्ञानी बिनु जाने भरमाए। जत ज्ञानी जन लाखन जेहि को जत ज्ञानी जन लाखन चारि वेदन की प्रतिशाखन। चारि वेदन की प्रतिशाखन। हारी अलख इमि लागे भाखन। हारी अलख इमि लागे भाखन। वृंदा विपिन सखिन अंचल पट लिपटि रहो सोई धाय। राधे राधे वृंदा विपिन सखिन अंचल पट लिपट रहो सोई धाय। राधे राधे वृंदा विपिन सखिन अंचल पट वृंदा विपिन सखिन अंचल पट लिपट रहो सोई धाय। राधे राधे ब्रज रस बरस ज्ञानी बिनु जाने ब्रज रस बरस रहो ब्रज ज्ञानी बिनु जाने भरमाए। बिनु जाने भरमाए ज्ञानी बिनु जाने भरमाए। राधे राधे बिनु जाने भरमाए ज्ञानी बिनु जाने भरमाए। राधे राधे ब्रज रस बरस रही ज्ञानी बिनु जाने भरमाए। ब्रज रस बरस रहो ब्रज ज्ञानी बिनु जाने भरमाए। अगले स्टैंजा में कहते हैं जेहि शंकर उर अंतर ध्यावत। ये वही श्री कृष्ण हैं जिनका ध्यान भगवान शंकर लगाया करते हैं। आप लोगों को पता होगा जो भगवान शंकर के भक्त हैं, the devotees who worship Bhagwan Shankar, they get a mantra which is called Tarak mantra. When their puja towards Bhagwan Shankar is completed, Bhagwan Shankar, when he is happy with his devotee, then instead of giving any other boon, he gives a mantra which is called Tarak mantra. And he says that you have to chant this mantra, then you will be emancipated.
What is that Tarak mantra? Om Namo Bhagavate Vasudevaya Namah. It is the name of Sri Krishna. So he also, whenever he sits in his samadhi, he contemplates on the beautiful divine form of Sri Krishna only, and he gives the same mantra to his devotees as well. So Jehi Shankar Ur Antar Dhyavat. He is the same Brahma who is contemplated by Bhagwan Shankar as well. Jako Bhed Ved Nahi Pavat. Ved are the main source of knowledge. The highest knowledge is attained through the Vedas. But Vedas also do not know about Sri Krishna. They have no idea of the secrets of divine form of Sri Krishna. That's why the Veds give only one introduction about Brahma, Alak. He is Nirakar. Nobody can see him. The Gyanis ask Vedas that tell me what is the name of that supreme power. Is there any name? No. He has no name. Is there any special quality of Brahma? No, Nirvishesh. He has no special quality. He is Nirakar, Nirvishesh. This is the knowledge of the Brahma. They know only about the powers of God. That's it. But they are completely unaware of the secrets of the divine love bliss of God. So, Jako Bhed Ved Nahi Pavat, Nirvikalp Nirlep Batavat. The Vedas say about Sri Krishna, about the Supreme Brahma, that Nirvikalp, he has no form, no attributes, nothing. And Nirvikalpa, he has no desire because Aprano Hamana Shubhro, he has no heart as well. There is no mind. मन नहीं है भगवान के. इसीलिए जब रास करने गए थे तो उन्होंने मनश्चक्रे वीक्षरंतु मनश्चक्रे मन बनाया पहले. डिजायर बनाने के लिए पहले मन बनाना पड़ेगा ना. तो मन बनाया उन्होंने. उसके बाद ये इच्छा की कि चलो रास करें और गोपियों को हम प्रेम रस प्रदान करें. तो अप्राणो हमनाह शुभ्रो. देयर इज नो माइंड ऑफ गॉड. दैट्स व्हाई निर्विकल्प. कोई उनके अंदर डिजायर नहीं है. और जब डिजायर भी नहीं है, माइंड भी नहीं है, तो निर्लेप. ही इज नॉट अटैच्ड टू एनीवन. देयर इज नो वन with who our Brahma can be attached. So nirvikalpa nirlepa bata. This is the knowledge which is given by the Vedas. No, this knowledge is given by the Vedas that he is nirvikalp, nirlep, he has no form, no attribute, nothing like that. And so in निकुंज विचुभानु लली के चरण पलोटत जाए. ज्ञानी वहां जाके क्या देख रहे हैं कि कुंज में श्री राधा रानी लेटी हुई हैं और स्वयं श्री कृष्ण उनके चरण दबा रहे हैं. और ऐसे वैसे नहीं. जब उनके वो चरण दबा रहे हैं तो इतने प्रेम में अभिभूत हो गए कि टप टप उनके प्रेम के आंसू बह रहे हैं. प्रेम में डूब कर, पूरी तरह प्रेम में निमग्न होकर वे श्री राधा रानी के चरण दबा रहे हैं और अपने आप को परम भाग्यशाली समझ रहे हैं कि मुझे इस सेवा का अवसर मिला. तो ज्ञानी लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि वेद तो कहते हैं कि इनकी कोई कामना नहीं है, ये तो कहीं लिप्त होते ही नहीं. इज नॉट अटैच्ड एनीवेयर एट ऑल. But here what I am seeing, see, he is pressing the feet of Sri Radharani, being totally engrossed in love of her. That's why they are confused. Is he really Brahma or someone else?
No, if he was someone else, if he is not Brahm, then our mind could not be attracted to him. Our mind is getting attracted. Our mind, we forgot about our samadhi. Now we don't want to go back in the samadhi again. They completely forgot about their samadhi forever after seeing Sri Krishna, because the beauty of Sri Krishna, the glimpses of Sri Krishna were so much blissful, so attractive, so full of bliss, that the bliss of their samadhi was nothing in front of that. That's why they are getting confused. जय शंकर उर अंतर ध्यावत, जय शंकर उर अंतर ध्यावत, जाको भेद वेद नहीं पावत, जाको भेद वेद नहीं पावत, विकल्प निर्लेप बतावत, निर्विकल्प निर्लेप बतावत, सोई निकुंज बिच भानु लल के चरण पलोटत जाय, राधे राधे सोई निकुंज बिच भानुलली के चरण पलोटत जाए, राधे राधे सोई निकुंज बिच भानु सोई निकुंज बिच भानुलली के चरण पलोटत जाए, राधे 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 सोई निकुंज बिच भानुलली के चरण पलोटत जाए, राधे राधे ब्रज रस बरस रहो ब्रज बीच, ज्ञानी बिनु जाने भरमार, बिनु जाने भर माय, ज्ञानी बिनु जाने भर माय, राधे राधे बिनु जाने भरमाय, ज्ञानी बिनु जाने भरमाय, राधे राधे रस बरस ज्ञानी बिनु जाने भर माय, ब्रज रस बरस रहो ब्रज बीच, ज्ञानी बिनु जाने भरमाय, जेहि मायावश विश्व चराचर, ब्रह्म अंड नायक विधि हरिहर। ये सारा जो चराचर जगत है, चर अचर जगत सारा का सारा, उनकी एक शक्ति है माया। भगवान की तीन शक्तियां है ना, चित शक्ति, जीव शक्ति, माया शक्ति। चित शक्ति तो उनकी अपनी पर्सनल पावर है, डिवाइन पावर है, वो तो सबसे ऊपर है। और उसके अलावा दो शक्तियां हैं, जीव शक्ति और माया शक्ति। जीव शक्ति तो चेतन है, भगवान चेतन है, और वो जीव शक्ति भी चेतन है। और माया शक्ति तो इनर्ट है। इसीलिए माया को तुच्छ शक्ति और जीव को उत्तम शक्ति, पराशक्ति बताया जाता है। तो जो भगवान की तुच्छ शक्ति है, जो कि इनर्ट है, जड़ है, उस माया के बल पर
भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड का सृजन करते हैं। इतने ज्यादा ब्रह्मांड हैं कि कोई उसकी गिनती नहीं कर सकता, गिन नहीं सकता कि कितने ब्रह्मांड हैं। तो जितने भी ब्रह्मांड हैं, सारा जो चर अचर जगत है, जिनके केवल एक सोच लेने मात्र से ही उनकी जड़ शक्ति माया के द्वारा प्रकट कर दिया जाता है। करना नहीं पड़ता भगवान को कुछ भी। निश्वसित मत्स्य वेदा वीक्षित मत्स्य चराचरम, खाली वो देखते हैं, ऐसे आंख उठाकर देखते हैं और अनंत कोटि ब्रह्मांड का सृजन हो जाता है। कुछ नहीं करना पड़ता। वो चाहे तो देखे भी ना, केवल उनके सोचने मात्र से हो जाता है, क्योंकि वो सत्य संकल्प है। भगवान के जो 8 गुण हैं, अपहृत पापमा विजरो विमृत्युर विशोको विशिघत्सो पिपासा सत्य कामा सत्य संकल्प, ये सबसे बड़ा उनका जो गुण है सत्य संकल्प, कि उन्होंने जो सोचा, सोचना है बस और तुरंत हो जाता है। तो जो इतनी बड़ी पावर है, जिनके सोचने मात्र से अनंत ब्रह्मांड उत्पन्न हो जाते हैं। ब्रह्म अंड नायक विधि हरिहर नाचत जो नट परवश वानर। और इन ब्रह्मांडों के जो गवर्नर्स हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, they are the governors of each Brahman. In each Brahman, there is one Brahma, one Vishnu, one Shankar. They are the Devatas. And these Devatas, Brahma, Vishnu, Shankar, they are fully controlled by Sri Krishna. Hari Harita Vidhi Vidhita Shivahi Shivata Jodai. Tulsidas ji is saying, Shivji is Shiv. He has the power of annihilation. Why? It is given by Sri Krishna. Brahma has the power of creation. That power is given by Sri Krishna. Vishnu has the power of sustaining this world. That power is also given by Sri Krishna. So they have to do whatever Sri Krishna wants them to do. They are fully controlled by Sri Krishna. He is such a great power, Sri Krishna. But what is seen, they learnt it in the Vedas, that he is the supreme power. All of them, all the governors of the Brahmans, they are under the control of Sri Krishna. But here, tehi de chach ne kusi chorin kotin rach nachay. But what the Gyanis are seeing over here, the gopis are going to sell the yogurt. Sri Krishna is going behind them. Give me a little bit of chach. Chach means dahi without butter. Butter has been taken away. That is chach. And he doesn't have any pot, any glass or any tumbler, and nothing like that. His small, tiny hands. And he's spreading the tiny hands and he's saying, please give me some chach. Please give me some chach. And gopis are saying, we are not here to plunder it, to donate it. We are going to sell it. We have to look after our family. We need some finance. That's why I'm going to sell it. Go away. But he keeps on going behind them. बार बार कहते हैं थोड़ी सी छाछ दे दे। जब वो बहुत बार मांगते हैं तो गोपी सोचती है कि चलो अब दे ही देना चाहिए। Why? She thinks if I will deny this now, then probably he will go to some other gopi. Then how would I get darshan? Although she prepared that yogurt, that charge, only for Sri Krishna. Because since she was going to make the yogurt when she was stripping the cow, since then she started thinking that I will make yogurt and then I will make makhan from that. Probably he will come tomorrow to
get my makhan, to steal my makhan. All the time, since that time, whole night she was thinking, tomorrow I will go towards that side. Probably he will meet me over there. I will go towards that street today. Probably I will meet him there. All the time, whole night she was thinking about Sri Krishna and she wanted him to take the yogurt. But when he comes, she said, no, I'm not going to uh, distribute it like this. I'm not donating it. We have to earn some money from that. But when after 3-4 times she said, okay, I will give you. You want yogurt? I will give you. But there is a condition. What's that condition? You have to dance first. We want to see your dance. If you will dance, only then we will give you charge. He has to get only that much charge. But the gopis are putting this condition. And Lord Krishna says, okay, I will dance. See, an ordinary dancer also wants some good stage, some costumes, some makeup, some orchestra. Only then they are ready to dance. But Lord Krishna, who is the best dancer in the entire universe, the most difficult dance is the Tandav Nritya of Bhagwan Shankar. But harder than that as well, most difficult dance is the dance of Sri Krishna when he was dancing on the fangs of the serpent. It was the most difficult thing. He is the best dancer in the entire universe, but there is no stage, no orchestra. What is the stage? The Braj Bhumi, the land of Braj. What is the orchestra? The clapping of the gopis. This is all. And he's dancing. When he finishes his dance, he says, now give me the charge. The other group of the gopis come over there. No, 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 don't give. We haven't seen his dance. You have to show your dance to us also. Only then you will get charge. Then he dances again. Then other group of gopis come over there. No, 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 don't give. We haven't seen his dance. Then he will get only that much of yogurt. But he has to dance again and again only for the little bit amount of the charge. Why? Because the gopis love so much. He is under the control of love. Seeing this pitiable condition of Brahma, the Jnanis are confused. Our Brahma is the Lord of the universe. He creates innumerable universes only by seeing just one glance. And here he is looking after all the universes without any effort, only by his sankalp, his resolution. He is looking after the entire universe. But here he is begging for the little bit of yogurt, and the uneducated gopis, they are denying again and again. And when they are ready to give, they are putting a condition that you have to dance first. Seeing this scene, the Gyanis are confused. शेष महेश दिनेश गणेश सुरेश हूँ जाहि निरंतर ध्यावे जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे नारद से शुक व्यास रटे पची हारे तऊ पुनि पार न पावे ताहि अहिर किछो हरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे. They are thinking all Brahma, Vishnu, Mahesh, Naradji, etc. Everyone is looking for one glance of grace of Sri Krishna. And here, he is looking for the grace of the gopis. That's why he is confused. जेहि मायावश विश्व चराचर जेहि मायावश विश्व चराचर ब्रह्मांड नायक विधि हरिहर ब्रह्मांड नायक
विधि हरिहर नाचत जो नट परवश बानर नाचत ज्यो नट परवश बानर तेहि दे छाछ ने कुसी छोड़न कोटिन नाच नचाय राधे राधे तेहि दे छाछ ने कुसी छोरिन कोटिन नाच नचाय राधे राधे तेहि दे छाछ ने कुसी छोड़न कोटिन नाच नचाय राधे राधे तेहि दे छाछ ने कुसी छोरिन कोटिन नाच नचाय राधे 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 रज रस बरसी रजो जाने ब्रज रस बरस रहो ज्ञानी बिनु जाने भरमाई जाके भ्रिकुटी विलास प्रलय कर। वे अपनी एक भाव को थोड़ा टेढ़ा कर दें तो सारे अनंत ब्रह्मांड में प्रलय हो जाता है। जाके डर कांपत डर थर थर, डर, fear itself is scared in front of Sri Krishna. भयादस्याग्निस्तपति भयात् तपति सूर्यः भयाद इंद्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पंच. The Vedas are saying fear itself fears in front of Sri Krishna. All the devatas, the celestial devatas, they have no courage to come in front of Sri Krishna because of the fear. Even the Yamraj, the god of death, goes 5 steps behind seeing Sri Krishna. He is so scared of Sri Krishna because he is the Lord of the entire universe. जाके भय कांपत डर, जाके डर कांपत डर थर थर, नाम ही जाको भव बंधन हर. There's one more. Only his name can release you from the ties of Maya. Naam. Only just chant the names of God and you will be free from Maya. नाम ही जाको भव बंधन हर. नाम लेने मात्र से ही भव बंधन से छुटकारा मिल जाता है. लेकिन ब्रज में उन बिचारे की अवस्था क्या है कि ताको उकल बांध, जिसके नाम लेने से बंधन से छुटकारा मिल जाता है, उनको मैया यशोदा, वे पढ़ी लिखी एक ब्रज की स्त्री है वो, और उखल से उन्होंने बांध दिया है श्री कृष्ण को. और श्री कृष्ण रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं कि अब नहीं करूंगा, अब चोरी नहीं करूंगा, अब किसी गोपी के साथ में मैं छेड़खानी नहीं करूंगा, मैया आपके मत बांध मुझे. रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं. और मैया कहती है अब तू बहुत गड़बड़ करने लगा है, बहुत नटखट हो गया, आज तो मैं तुझको बांध दूंगी. और हाथ में सांटी है. मैया इज हैविंग ए स्टिक. इट्स अ स्मॉल स्टिक. What is that in the stick that Sri Krishna is trembling because of the fear? Nothing. There is the love only. There's the power of love is there. Otherwise, if you just do like this, it will go in some other planet. He has so much power. But Maya Yashoda is showing the stick. आज मैं तुम्हें ठीक करूंगी. I will fix you today. I will teach you a lesson today. She is saying like that. And Thakurji is trembling because of the fear. He requests, Mare mat maiya vachan bharvaile. I can swear. I will never do, I will never repeat all these activities. I will never be mischievous in this Braj. He is saying like that. Mare mat maiya vachan bharvaile.
भैया की खवा ले चाहे बाबा की खवा ले, भैया की खवा ले चाहे बाबा की खवा ले, क्षीर सागर में चाहे ठाड़ो करवा ले, मारे मत मैया. I can swear on the name of Bhaiya, I can swear on the name of Baba, I can stand in Chi Sagar to promise that I will not do all these mischievous things. Don't beat me, don't tie me with the ukhal. He is saying like that. Seeing this scene, that the one whose name is enough to be free from Maya, now he is tied over here with the mortar. Seeing this scene, the Gyanis are confused. जाकी भ्रिकुटी विलास प्रलय कर, जाकी भृकुटी विलास प्रलय कर, जाके डर कांपत डर थर थर, जाके डर कांपत डर थर थर, नाम ही जाको भव बंधन हर, नाम ही जाको भव बंधन हर, ताको उखल मांगी यशोदा लसाठी डर पाय, राधे राधे ताको उखल बांधी यशोदा ऐसाटी डर पाए, राधे राधे ताको उखल मांगी यशोदा लसाठी डर पाय, राधे राधे ताको उखल बांधी यशोदा ऐसाटी डर पाए, राधे 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 ताको खलवानी शोभा लसानी डर पाय, राधे राधे ताको उखल बांधी यशोदा ऐसाटी डर पाए, राधे राधे रज रस बरसी रही रही, ज्ञानी बिनु ज्ञानी बरमाए, रज रस बरस रहियो रही, ज्ञानी बिनु जाने भरमाए, बिनु जाने घर माय, ज्ञानी बिनु जाने घर माय, राधे राधे बिनु जाने भरमाए, ज्ञानी बिनु जाने भरमाए, राधे राधे रज रस बरसी रही रज, ज्ञानी बिनु जाने घर माय, रज रस बरस रहियो रही, ज्ञानी बिनु जाने भरमाए, जेहि लगी जपी तपी भरमावत. बहुत सारे लोग हजारों जन्म से जप तप कर रहे हैं जिसको पाने के लिए. जोगी जोग अगिनी जरी जावत. योगी लोग हजारों वर्ष तक समाधि में रहते हैं कि उनकी एक झलक मिल जाए. एक झलक पाने के लिए बड़े बड़े योगी तपी जपी ये सब तरसते रहते हैं, नहीं पा पाते. ब्रज में एक बार एक गोपी जंगल में बैठी हुई ध्यान की मुद्रा में, जैसे वो कोई ध्यान कर रही है, तप कर रही है. नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ. उन्होंने कहा कि ब्रज में तुम्हें ब्रजवासियों को क्या आवश्यकता पड़ रही, क्या पाना है तुम्हें अब कि जो तुम तप करने बैठी हो. और लोगों को तो किसी को स्वर्ग पाना है, किसी को मोक्ष पाना है, तो वो लोग करते हैं तपश्चर्या. तुम्हारे पीछे तो मोक्ष देने वाला चाकर के समान नौकर बनकर घूमता है. तुम्हें प्रसन्न करने के लिए कितनी कितनी लीलाएं करता है. वो तो तुम्हारे अधीन है बिल्कुल.
और उसके बावजूद भी तुम तपश्चर्या कर रही हो, पूजा कर रही हो, तुम्हें क्या चाहिए, क्यों कर रही हो? तो सखी कहती है, वो गोपी कहती है नारद जी से, नारद जी आप तो बड़े भारी मुनि हैं, आप अगर आशीर्वाद दे देंगे तो मेरा काम बन जाएगा। अरे तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें किस बात का आशीर्वाद चाहिए? बोले वो जो श्री कृष्ण है ना, वो मेरे हृदय में ऐसे बस गया है, मैं निकालने की कोशिश कर रही हूँ। मैं तपश्चर्या इसलिए कर रही हूँ कि मेरे हृदय से वो निकल जाए। तो नारद जी ऐसा कुछ करो, कुछ ऐसी बात करो, संत्यज तदसखि तदुदंतम यदि सुख लवमपि समीह से सख्या। अगर तुमको मेरा थोड़ा सा भी सुख चाहिए, थोड़ा सा भी तुम मुझे सुख देना चाहते हो, तो कुछ ऐसा बताओ, कुछ ऐसा करो कि मैं उसको भूल जाऊं। ऐसी कोई बात शुरू करो कि मेरे माइंड से वो श्री कृष्ण निकल जाए। आश्चर्य में पड़ गए नारद जी, हक्के बक्के रह गए, ये क्या बोल रही है? प्रत्याहृत्य मुनि क्षणम विषय तो यस्मिन मनोधित्सति बालासौ विषयेषु सज्जति मन प्रत्याहरंती तथा। नारद जी आश्चर्य में पढ़ के कहते हैं कि हम संसार से विषयों को हटाकर, मन को हटाकर, प्रत्याहृत मन विषय तो यस्मिन मनोधित सती, किसी तरह हमारा मन लग जाए श्री कृष्ण में, इसके लिए हम लोग तप करते हैं, साधना करते हैं, हजारों वर्ष समाधि में बैठे रहते हैं, नहीं लग पाता। बाला सौ विषयेषु सज्जति मना। और ये कैसी भोली है, ये कहती है हमारा मन वहां से हटा के कहीं संसार में लगा दो, कोई और बात करो, संसार की बात करो, रशिया और यूक्रेन की बात करो, जो भी करनी है करो, लेकिन उसकी बात मत करो, उसको निकाल दो हमारे मन से, कुछ ऐसी बात करो। नाथ जी कहते हैं हम लोग तो इतने प्रयास करने के बाद भी उनको हृदय में ला नहीं पाते, और तुम उसको निकालने की बात, मुग्धासो किल पश्यत से हृदय निष्क्रांति आकांक्षति, तुम उसको हृदय से निकालने की बात कर रही हो। ये सुन के वो हक्के बक्के रह गए। अरे भगवान, यहाँ ब्रिज में तो किसी को समझना ही बहुत मुश्किल है। कौन सोच सकता है कि कोई ये साधना कर रहा होगा कि हमारे हृदय से श्री कृष्ण निकल जाए? ये ब्रज में ही पॉसिबल है। ये देख कर आश्चर्य हो रहा है, ज्ञानियों को भ्रमित हो रहे हैं वो। और वही जिनकी कृपा को पाने के लिए, जिन निज बल कृपा कोर नहीं पावत, ये योगी लोग इतना तप करते हैं, इतनी बड़ी बड़ी सिद्धियों को प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन अपने सिद्धियों के बल पर वो श्री कृष्ण की कृपा का एक कण भी नहीं प्राप्त कर पाते। निज बल कृपा कोर नहीं पावत, सिद्धियों के बल पे वो कुछ नहीं प्राप्त कर पाते। सो कृपालु निज माय गोद हित पर्यो धरण मिल खाए। वही मैया की गोद में आने के लिए, जिसकी एक झलक पाने के लिए योगींद्र मुनींद्र तरसते हैं, एक झलक नहीं पा पाते, वही श्री कृष्ण एक जीव की गोद में आने के लिए, यशोदा मैया की गोद में आने के लिए मचल रहे हैं, पृथ्वी पर लौट रहे हैं, रो रहे हैं कि मैया गोद में ले ले। और मैया कहती है हर समय गोद में ले लो, और भी बच्चे हैं देखो, सब खेलते रहते हैं, तू ही अकेला अनोखा है क्या, हर समय गोद में? मुझे और भी कुछ घर के काम करने हैं, मैं कैसे तुझको हर समय गोद में ले सकती हूँ? नारद जी दृश्य देख रहे हैं, उन्होंने देखा तो आश्चर्य में पड़ गए कि अरे, मतलब इतने भ्रमित हो गए नारद जी सरीखे ज्ञानी कि उनको ये डाउट हो गया कि ये जो लेडी है जिसकी गोद में आने के लिए बच्चा रो रहा है, ये ब्रह्म है या ये बालक ब्रह्म है? सुना है नंद बाबा के घर में अवतार हुआ है, लेकिन लगता है ये लेडी जो है ये अवतार है, क्योंकि जीव ब्रह्म की गोद में जाने के लिए मचलता है, ब्रह्म जीव की गोद में जाने के लिए नहीं मचलता।
तो ये इज इंसिस्टिंग टू कम इन द लैप ऑफ यशोदा जी, इट मीन्स यशोदा जी इज ब्रह्म. बट नो, आई हर्ड इट इज पुरुषा अवतार. ये तो पुरुष अवतार हुआ है, तो इसके मतलब ये बच्चा है, ये ब्रह्म है. तो उन्होंने ध्यान लगाया, जब उन्हें पता चला कि ये बालक जो मैया यशोदा की गोद में आने के लिए तरस रहा है, तड़प रहा है, ये ब्रह्म है, तो उनको घोर आश्चर्य में पड़ गए वो. और पास पहुंच के लैले री सुखधाम, उन्होंने इनसे मैया से रिक्वेस्ट की, मैया ये तो सुख धाम है, इनकी तो एक झलक पाने के लिए हम तरसते हैं, ये बेचारे आपकी गोद में आने के लिए मचल रहे हैं, तो आप इनको ले लो. तो मैया, तो मैया है, प्यार तो है ही अपने लाला से, उनको तरस आ गया. मैया ने उनको गोद में उठा लिया. अब क्योंकि जमीन पे लौट रहे थे, कपड़े गंदे हो गए थे, सारे शरीर में मिट्टी लग गई थी, रो रहे थे, एक तो आंसू और फिर ऊपर से मिट्टी मिलके सारा शरीर गंदा हो गया था उनका. तो उनको फिर से नहलाया धुलाया, अच्छे कपड़े पहनाए, उनका श्रृंगार किया, और फिर उनको खिलौने उलौने देकर लगा दिया खेल कूद में. और ठाकुर जी खुश हो गए, खेलने लगे. मैया अपने काम में लग गई. इतने में बाहर गोपियां थी, दही बेच रही थी. ये तो उनसे पूछो तुम कि सारे ब्रज में ये नंद बाबा का ही घर तुम्हें मिला है, जिसके किनारे किनारे घूम के तुम दही ले लो. दही, उनके यहाँ तो 10,000 गायें ऑलरेडी हैं, तुम्हारे दही की उनको क्या आवश्यकता है. लेकिन मन में लालच है कि शायद कन्हैया खेलता कूदता बाहर आ जाए, तो एक झलक उनकी देखने को मिल जाए, उनके दर्शन मिल जाए. इसीलिए नंद बाबा के महल के चारों ओर लो दही करती हुई वो घूम रही हैं. और श्री कृष्ण के विषय में सोचते सोचते मन उनका उनमें इतना डूब गया कि वो लो दही कहना भूल गई. लो कन्हैया, लो कृष्ण, लो माधव, लो दामोदर, ऐसा कहना शुरू कर दिया. ठाकुर जी ने अंदर से सुना. उनका अब तो दर्शन देने जाना पड़ेगा, नहीं तो ये तो मुझे ही बेच देंगी ये गोपियां. ठाकुर जी बाहर आए तो गोपी खड़ी हुई थी मटका लेके दही का. ठाकुर जी को देखा, इतना आनंद हुआ कि प्रेम की समाधि में चली गई. मटका गिर गया हाथ से, अब नीचे मिट्टी है. दही का मटका गिर गया, दही और मिट्टी मिलके कीचड़ हो गई. गोपी को जब ध्यान आया, अरे लोग क्या कहेंगे, तू यहाँ क्यों बेचने आई थी दही, इनके यहाँ तो 10,000 गायें ऑलरेडी हैं. तो भाग गई वो वहां से. ठाकुर जी आए, बड़े खुश हो गए, उस कीचड़ में थप छप करके खेलने लगे. बच्चों का स्वभाव होता है कि जहाँ पर थोड़ी मड होती है, कीचड़ होती है, दे प्ले इन दैट, दे आर वेरी हैप्पी टू प्ले इन द मड. बट देयर इज समथिंग एल्स ऑल्सो. ये तो हमारे भक्तों की चरण रज है, इसको मैं अपने अंग प्रत्यंग से लगा लूं. इसलिए ठाकुर जी खूब अच्छे से उस मड में नहा रहे हैं. मैया ने बहुत देर तक जब आवाज नहीं सुनी श्री कृष्ण की, तो उन्होंने सोचा, जब बच्चे बहुत कोई सीरियस टाइप की गड़बड़ी कर रहे होते हैं, कोई चंचलता कर रहे होते हैं, तो उनकी आवाज़ नहीं सुनाई देती, बिजी हो जाते हैं किसी गड़बड़ करने में. तो उनका कुछ गड़बड़ कर रहा है. उन्होंने देखा, घर में तो कहीं दिखाई नहीं दिए, बाहर देखा तो मिट्टी में खूब लथपथ होकर कीचड़ में बैठे हुए हैं. तो मैया को गुस्सा आ गया. इदानीम ते कृष्ण धूलि धूसरितम बपू, अभी अभी तेरे शरीर को मैंने नहा धुला के साफ किया था, और अभी तुमने फिर कीचड़ लपेट ली अपने. तो गुस्सा है. तो माएँ जब कभी गुस्सा होती हैं बच्चों पे, तो ऐसे बोल देती हैं, सुअर कहीं का. ऐसे मैया ने भी कह दिया सुअर. लगता है तो पूर्व जन्म में सुअर था. ठाकुर जी मनी मन मुस्कुरा रहे हैं. यहाँ बात तो सही है कि शुक्र अवतार तो हो ही चुका है मेरा पहले. पंकाभिषिक्त सकला वयवं विलोक्य दामोदरं वशति कोपवशाद्य शोदा त्वं शूकरोसि गतजन मणिपूतनारे नित्युक्ति सस्मित मुखो बतुनो मुरारी. तो लगता पूजन में सुअर था, ऐसा उनको डांट रही है. तो ये सब देखकर कि ठाकुर जी हमारे जो अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं, जिनके लिए जिनके
झलक पाने के लिए बड़े बड़े योगी मुनिंद तप करते रहते हैं हजारों वर्ष तक, वो मैया की गोद में आने के लिए इस तरह मचल रहा है, ये देखकर ज्ञानी लोग कंफ्यूज्ड हो गए। जेहि लगी जपी तपी भरमावत, जपी तपी भरमावत, जोगी जोग अगिनि जरि जावत, जोगी जोग अग्नि जल जावत, निज बल कृपा कोर नहीं पावत, निज बल कृपा कोर नहीं पावत, सो कृपालु निज माय गोद हित पर्यो धरणी बिल खाय। राधे राधे सो कृपालु निज माय गोद हित पर्यो धरणी बिल खाय। राधे राधे सो कृपालु निज माय गोद हित पर्यो धरणी बिल खाय। राधे राधे सो कृपालु निज माय गोद हित पर्यो धरणी बिल खाय। राधे 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 सो कृपालु निज माय गोद हित पर्यो धरणी बिल खाय। राधे राधे सो कृपालु निज माय गोद हित पर्यो धरणी बिल खाय। राधे राधे ब्रज रस बरस रयो ज्ञानी बिनु जाने धर्मा। ब्रज रस बरस ब्रज रस बरस रयो ज्ञानी बिनु जाने धर्मा। बोले अखिल रसामृत सिंधु बलबंधु श्री कृष्ण की जय। श्रीमद सद्गुरु सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय